नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्र नंबर 254। આ પત્રની વિશેષતા એ છે કે સાવ અજ્ઞાની જેને કાંઈ જ આવડતું ન હોય એ જીવ કેવી રીતે મુમુક્ષુ બને ને પછી કેવી રીતે જ્ઞાન દશા સુધી પહોંચી જાય, એવા સ્ટેજ પર પહોંચે કે પછી જ્ઞાન દશા થાય ને થાય। તો એની અંદર सबसे पहले कहते हैं कि जीव कई प्रकार की गलती करता है और दो जीव के बर्तन भी ठीक एक सरीके नहीं मिलते हैं, सब अलग अलग प्रकार के कई प्रकार की गलतियां करते हैं। पूज्य बेंसी के वचनामृत 198 शायद, उसमें कहा है कि जीव को फंसने के स्थान अनंत है, कई प्रकार की गलतियां हैं, कहीं ना कहीं तो भूले ही भूले, लेकिन छूटने का एक ही स्थान है। लिखे हैं कि छूटने का, मोक्ष मार्ग में कदम रखने का एक ही स्थान अपने चैतन्य दरबार में जाना हो। बाकी सब अपने आत्मा को छोड़ करके जो कुछ भी जीव करता है, कहीं भी दृष्टि लगाता है बाहर में, सब फंसने के धंधे हैं। तो कई प्रकार के जीव गलती करता है, लेकिन कृपालु कहते हैं कि असल गलती एक ही है। अब इतनी सारी गलतियां वो मत देखना, आप एक गलती को देखना और उस गलती को ठिकाने लगाने का कोशिश करना, तो आपकी मेहनत बच जाएगी। पूरी दाली पत्ते काटने जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा, इसके बाद भी दाली पत्ते वापिस आ जाएंगे। कृपालु इसमें भी मूल बात को बताते हैं कि मूल गलती क्या, दर्शनों की गलती है। मूल गलती जो है अपने आत्मा की चिंता ही नहीं करना, अपने आत्मा पे दया ही नहीं करना, उसको जन्म मरण में भटकावे ऐसे ही भाव करते रहना दिन रात सुबह शुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। दिन रात यही किया है इस जीवन, अनंत काल से अभी तक यही काम किया है। शुभ करना अशुभ करना, शुभ करना अशुभ करना, यम नियम संयम सब कर लिया है इस जीवन ने, लेकिन वह साधन बार अनंत कियो तदपि कछु हाथ पड़े। जीव बहुत भटका है, कई प्रकार की गलती की, लेकिन कृपालु यहाँ कहते हैं कि एक सबसे बड़ी गलती को निकाल देवे तो लाइन पूरी सुधर जावे। वो सबसे बड़ी गलती क्या, कि जीव को अपने आत्मा को बचाने का, उसको भव भ्रमण से छुड़ाने का विचार ही नहीं आवे और दृढ़ निर्णय नहीं होवे, वो सबसे बड़ा दोष है। जितने भी दूसरे जो गलतियां होती है ना, उसका ही कारण है। ये मेन दोष जब तक नहीं निकालोगे तब तक बाहर से कितना भी आप ठिकाने लगाओ उसको, लेकिन दुर्गंध तो दुर्गंध ही रहेगी। गटर के ऊपर आप गटर नहीं दिखे इसलिए क्या करते हैं, ऊपर मिट्टी डाल के फिर फूल छांट लेते हैं, थोड़े दवा वगैरह में ले जाके जो होती है वो जंतुओं की डाल लेते हैं। और नहीं आते हैं प्रधानमंत्री वगैरह आते हैं तो रास्ते सब साफ करके नहीं करते हैं सब, कितनी देर के लिए, बस एक दिन का नहीं रहेगा वो, फिर बाद में कुछ दुर्गंध तो आने ही वाली है, क्योंकि निकाला नहीं है ना कचरा, अंदर से कचरा नहीं निकाला है, ऊपर से ढक पिछड़ा किया है। मूल गलती निकले बिना आप कितना भी मंदिर बनवा लो, उपवास कर कुछ भी कर लो, फायदा होने वाला नहीं है। 142 नंबर का श्लोक आत्मज्ञाति में भी बहुत जबरदस्त है, बहुत सुंदर है।
वो भी लेते हैं, निद्रा अधिकार में है। एकदम क्लियर कट कहीं से भी लोगे आप तब तो एक ही मिलेगा, समय सार हो चाहे कोई भी हो ना, कोई भी ज्ञानी के वचन ले लो आप। 142 नंबर का संवर अधिकार में 36 इधर है 142 नंबर निद्रा अधिकार। कोई जीवो तो अति दुष्कर महा दुख हो सके ऐसे क्रिया करते हैं। कैसी क्रिया के जो मोक्ष की तरफ नहीं लेके जाती है, अधोगति की तरफ ले जाती है। ऐसी बहुत सी क्रिया करते हैं। ये जो अपने पापी पेट के लिए जो कुछ भी होता है ना, भागम दौड़ी दिन रात, वो तो मोक्ष की तरफ जाने वाले कदम नहीं है। पूरे कहाँ है, यहाँ बाहर से ऐसा इज्जत मिलेगी, आबरू मिलेगी, पैसा मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लोगों को जो अच्छा लगे वो सब मिलेगा, परिग्रह मिलेगा, मोटर बंगला गाड़ी वाड़ी सब मिलेगा। आगे बढ़ोगे तो इलेक्शन में जीत जाओगे और कुर्सी पे भी बैठ जाओगे, ये सब मिलेगा बाहर से। लेकिन ये मोक्ष से परान्मुख है। और ये इसके लिए वो कुर्सी पे बैठने के लिए कितना कितना कावा दावा किया, कितना प्रपंच किया है इस जीव ने। ये सब मोक्ष के तरफ ले जाएगा कि अधोगति की तरफ ले जाएगा? कि मोक्ष से परान्मुख ऐसे कर्मों के बिना स्वयं में ज्ञानी गुरु की आज्ञा के बिना स्वच्छंद से अपने को जो सूझा, जिसमें सुख लगा वो किया, जिन आज्ञा के बिना चला जितना, और कितना दुख पाया, तो चाहे जितना पा लेना है पालो, लेकिन शांति मिलने वाली नहीं है। एक तो बात वो। अब दूसरी बात, કેટલાક જીવો બીજા કોઈ જીવો મોક્ષથી સન્મુખ અર્થાત કથનચિત જીનાજ્ઞામાં કહેલા। હવે કેટલાક લોકો જીનેશ્વરની આજ્ઞા માને છે અને એને કારણે મહાવ્રત અને તપ એ બધું કરે છે। જીનેશ્વરની વાણીમાં બે પ્રકાર આવ્યા છે, નિશ્ચય અને વ્યવહાર। નિશ્ચય છોડી દીધો, સમજ્યા, અને વ્યવહાર બધું બરાબર પાલન કર્યું, યમ નિયમ બધા। જીન આજ્ઞામાં રહીને સાચા દેવ ગુરુ વિતરાગી શાસ્ત્રની અંદરમાં રહીને પંચમહાવ્રત અને મહાન તપસ્યા કરી, બહારથી નગ્ન દિગંબર સાધુ થઈ ગયો। એના તપના ભારથી ઘણા વખત સુધી ભગ્ન થયા થકા, તૂટી મળતા થકા, ક્લેશ પામે તો પામો, પણ માર્ગ મળવાનો એ વાત કરે છે। પરંતુ જે સાક્ષાત મોક્ષ સ્વરૂપ છે પોતાનો આત્મા, એના શરણે ગયા વિના આ જીવને રંચ માત્ર પણ શાંતિ થવાની નથી। 142 નંબરનો કળશ આત્મખ્યાતિ અમૃતચંદ્ર આચાર્ય દેવ 204 નંબરની નિદ્રા અધિકારની ગાથા પૂરી થાય ને પછી આ લખ્યું છે, એક આત્મામાં શાંતિ છે, બીજા ક્યાંય નથી। એ આત્માને ભૂલીને આ જીવ જે કંઈ પણ કરે, જેટલા નાચ નચવા નચવી લો આપ, તમારો એકે દોષ ઓછો થવાનો નથી। બહારથી દેખાશે સુગંધ થોડી કે બહુ ધર્મિષ્ઠ છે ને, બહુ રોજ મંદિર જાય છે ને, શાસ્ત્ર વાંચે, સત્સંગ કરે છે, આખો દિવસ હરિયન ભગવાનનું નામ ને પંચ પરમેશ્વરનું ધ્યાન ને પ્રતિક્રમણ ને પ્રત્યાખ્યાન ને બધું કરે છે, એ મતલબ નથી કાંઈ, બધું ઝીરો થઈ જવાનું, સમજી લેવાનું, કાંઈ વળવાનું નથી। જીન આજ્ઞાથી 12માં ક્રિયા કરો તોય ન વળે, અને જીન આજ્ઞામાં રહીને માત્ર વ્યવહારને પકડીને ચાલો તોય ન વળે, કાંઈ એ કઈ મળવાનું નથી। 142 નંબરના કળશમાં કહે છે એનો મતલબ શું કે એક આત્માના શરણે ગયા વિના તમારા ભવ બ્રહ્માંડના દાડિયા એક આંટો પણ તળવાનો બહુ પુણ્ય કેરા પુંજથી દેહ માનવ નો મળ્યો તો એ અરે ભવ ચક્ર નો આંટો નહીં। કેમ કે પોતાના સ્વરૂપને જ જાણતો નથી, ઘટપટ આદિ જાણતું, તેથી તેને માન જાણનાર તે માન નહીં। કહીએ કેવું જ્ઞાન, દુનિયામાં તો બહુ હોશિયારી દાપણ ઘણું છે, પણ શું કરે, અહીંયા પોતાને જ ભૂલી ગયો। कृपाड़े यहाँ एम कैसे 254 ની અંદર कि स्वयं को जो भूल गया है, ऐसा जो अज्ञान है, उसको मिटाने का जो प्रयत्न नहीं करता है, अपने आत्मा की दया नहीं करता है, अपने आत्मा की संभाल नहीं करता है, शांति की सच्ची भावना नहीं रखता है, वो जीव का सबसे बड़ा दोष है। खून करना सबसे बड़ा दोष नहीं है,
एक बम बनाकर, अणु बम बना करके सारी दुनिया को मार डालना, खत्म कर डालना, वो इतना बड़ा दोष नहीं है जितना ये बड़ा दोष है। क्योंकि वो दोष चारित्रमों का है, क्रोध का है, उसकी सजा में एक बार नरक में जाएगा, फिर वहां से बाहर निकल जाएगा, लेकिन इसमें से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि दर्शन मोह का दोष है। ये कृपावृत्ति के वचन जो है डायरेक्ट दर्शन मोह को खत्म करने वाले वचन लगते नहीं, वो चमत्कारिक लैंग्वेज है उनकी, इसलिए मालूम नहीं पड़ता कि कहाँ अटैक करते हैं, लेकिन मूल बात वो है। સર્વથી મોટો દોષ એ છે કે જેથી તીવ્ર મુમુક્ષુતા ઉત્પન્ન જ ન થાય અથવા મુમુક્ષુતા જ ઉત્પન્ન ન થાય, જીવને છૂટવાની ભાવના ન થાય, અને ક્યાંક તો રોકાયો છે ને, આત્મામાં નથી જતો તો ક્યાંક તો રોકાયો ને, ક્યાં રોકાયો? ચાલો આખો દિવસ એ ક્યાં રોકાયો મને કહેજો. બેનસીના વતનામાં છે કે જીવ પોતે ખોવાઈ ગયો છે જોતો નથી, અને નાનકડી સોય ખોવાઈ જાય તો એને ગોતાગોત કરે છે આખો દિવસ. રૂપિયા, પૈસા, ધન, દોલત, કુટુંબ, પરિવાર, સગા સંબંધી, સમાજ, આખો દિવસ ઉપયોગ ત્યાં રખડે છે, પછી જીવ મળે ક્યાંથી? ક્યાંથી દર્શન થાય? ને એમને એમ આખો ટાઈમ આટલી જિંદગી ચાલી જાય છે, આવી રીતે જ ગઈ છે ને આખી જિંદગી અત્યાર સુધીની. क्या होगा फिर क्या होगा? आंख बंद होने के बाद क्या होगा? खलास. થોડા દિવસ શાંતિ છે, મનુષ્યમાં થોડી શાંતિ વધારે હોય. શાંતિ એટલે એટલા માટે કહીએ કે નરક જેવી પ્રતિકૂળતા નથી ને સ્વર્ગ જેવી હાય હોય નથી, સમજ્યા? સમશીતોષ્ણ કહેવાય એને. બહુ ઠંડી નહીં ને બહુ ગરમી નહીં, બહુ ધોકા ના પડે નરક ના જેવા, અને સ્વર્ગ જેવી સાહેબી નથી, એટલે કઈ બહુ પ્રપંચમાં આને ભોગવું એવું ન થાય. પછી સ્વર્ગમાં દેવ હોય, બધી સાહેબી હોય, પણ ભોગવવાનો તો એક સમયમાં એક જ ને, પછી બાકીની ચાર કેવી આકુરતા થાય? બધું એક સાથે જોઈએ છે જીવન. ખાવું છે, પીવું છે, જોવું છે, સાંભળવું છે, બધું એક સાથે. પણ એક સાથે તો જીવનો ઉપયોગ લાગે એમ નથી સદમસ્ત નો. જેટલી વધારે સાહેબી મળે બહારમાં પરિગ્રહ, એટલો વધારે જીવ દુખી. સ્વર્ગના જીવો દુખી અને નરકના જીવ. એક મનુષ્ય ભાવમાં ગમે એટલો ઠીકઠાક હોય ને તો એકાદ લાકડી તો પડે, છોકરી ભાગી જાય, છોકરો કઈક કરી નાખે, ક્યાંક તો એક બધે ઠેકાણે પુરાવાના ન હોય, ક્યાંક તો દુઃખ હોય ને હોય. અને અંતરાત્માને પૂછજો કઈક, બધું બરાબર છે, પણ આ એક થોડી તકલીફ છે. હશે ને હશે કઈ ને કઈ તો. બધી સાહેબી કોઈને નથી હોતી, એટલે આ સમશીતોષ્ણ કહેવાય. આ અનુકૂળતા છે. આ જે પીરિયડ છે મનુષ્ય ભાવ, એ ધર્મકર્ણની કમાણી કરવાનો સારામાં સારો અવસર છે. એમાં જયારે કૃપાળુદેવ જેવા જ્ઞાની મળે, ગુરુદેવ જેવા જ્ઞાની મળે, એટલે ખલાસ, બેડો પાર જ થઈ જાય. પણ આંગળી છોડીવી નહીં, આંગળી પકડીને ચાલે તો. આંગળી જેથી છોડીને એથી સમજી લેવાનું ગોથા ખાધા છે ભવસાગરમાં. આંગળી પકડીને રાખે તો કઈ વાંધો નથી, બચી જવાશે. આ બચાવવા માટે કૃપાળુદેવ રોજ આવે છે અહીંયા આગળ, સમજાવે છે કે ભાઈ તારો દોષ મોટા મોટો આ એક જ છે, એને કાઢી નાખ તો બધું બરાબર છે તારું. કઈ બહારથી કઈ ફેરફાર કરવાની જરૂર નથી, અંદરનો દોષ કાઢી નાખતો. તું અત્યાર સુધી જે કઈ કરે છે એની અંદર તારા આત્માની જરા પણ સંભાળ લેતો નથી. તારે શાંતિ જોઈતી જ નથી ખરેખર અંતઃકરણથી. જો તું આ એક નક્કી કરી નાખ ને કે હવે મને કોઈ ગમે તેમ થાય પણ મારે શાંતિ જ જોઈએ છે, બીજું કઈ નહીં મારે. રૂપિયા હોય તો ચાલે, ન હોય તો ચાલે, ઇજ્જત મળે તો ઠીક, ન મળે તો ઠીક, ધંધો ચાલે તો ઠીક, ન ચાલે તો ઠીક, મુझे શાંતિ चाहिए किसी भी कीमत पे. આ એક નક્કી કરી નાખતો અંદરમાં, ખલાસ, તારો બેડો પાર. જા આત્મ ભાવના ભાવતા નહીં, કેવળ જ્ઞાન છે. સમય દર્શન ને શું એ તો મફતમાં મળશે. એ તો વચ્ચેનું સ્ટેશન છે, મુંબઈ જઈએ એટલે પુના વચમાં આવે જ. કેવળ જ્ઞાન ની પ્રાપ્તિ થાય જો આત્મ ભાવના સાચી હોય તો, શુદ્ધ અંતઃકરણ ની ભાવના. એટલે અહીંયા એ વાત જો અંતઃકરણ ની, શુદ્ધ અંતઃકરણ ની ભાવના નથી તો એ તો ખોવાઈ જવાનો ભવસાગર ની અંદર, પત્તો લાગશે નહીં. પછી રજકણ તારા રખડશે જેમ રખડતી, પછી નર્તન પામીશ ક્યાં? ચેત નર. અત્યારે ચેતવાનો ટાઈમ છે. એમાં શું ડિસિઝન મોટું લેવાનું છે? પોતે પોતાનું જ કરવાનું છે ને. એમાં ડિસિઝન શું લેવાનું હોય? પૂછવું પડે કોઈને? કોઈની પરમિશન લેવી પડે? બાપુજીની કે મમ્મીની કે પત્નીની કે છોકરાઓની? ભાઈ મારે શાંતિ જોઈએ છે, હવે મેં નક્કી કરી નાખ્યું છે, તમે હા પાડો તો. એમ પૂછવાની જરૂર છે? કોઈની પરમિશન ની જરૂર નથી. આ એવો માર્ગ છે કે કોઈની પરમિશન ની જરૂર નથી. પોતે પોતાનું હિતનું કરવું છે ને, કઈ પણ કરવું છે. બીજા માટે તો અનંતકાળથી કરે છે, પણ પોતાનું હિતનું શું કરશે જીવ? આત્માનું શું કરશે જીવ?
અહીંયા આત્માને માટે જગાડે છે અહીંયા કૃપાળુદેવ કે મુમુક્ષુતા જો ઉત્પન્ન ન થાય તો સૌથી મોટામાં મોટો દોષ છે. કે છે કે મુમુક્ષુતા કોને કહેવાય કે સર્વ પ્રકારની મોહ આસક્તિથી મૂંઝાઈને એક મોક્ષના વિશે પ્રયત્ન ચાલે. જીવનો ઉપયોગ ક્યાંક રોકાય છે, જોઈએ છે શાંતિ, એને માટે આત્માનું દર્શન કરવા છે, પણ ઉપયોગ અંદરમાં એક સેકન્ડ પણ જામતો આ प्रॉब्लम है. चाहिए शांति, उसके लिए आत्मा का दर्शन करना ही पड़ेगा, कंपलसरी है. बिना उसके दर्शन किए किसी को अंश मात्र भी शांति कभी भी मिलती नहीं है. संयोग की शांति मिल सकती है थोड़े दिन के लिए, वो भी हमेशा के लिए नहीं. और भ्रमित करने वाली शांति मिल सकती है, लेकिन सच्ची शांति तो आत्मा के दर्शन के बिना मिल ही नहीं सकते, किसी को भी नहीं मिलती है. चाहे चक्रवर्ती हो तो भी नहीं मिलती है, स्वर्ग का देव हो तो भी नहीं मिलती है. आत्मज्ञान के बिना शांति नहीं मिल सकती. और वो आत्मा का दर्शन करने के लिए बाहर से दृष्टि हटा करके अंतर में देखना है, लेकिन अंतर में एक सेकंड भी हम ठहर सकते नहीं. ये हमारी प्रॉब्लम है एक बहुत बड़ा. क्यों, क्या वजह है कि हमारे सराउंडिंग्स जो है, शरीर से लेकर के कुटुंब, परिवार, माँ बाप, भाई बहन, सगे संबंधी, दुकान, व्यापारी मंडल, वहां हमारा उपयोग चले जाता है. वो हमारा उपयोग को खींच लेते हैं बाहर. वहां से टाइम मिला और थोड़ा एक आधा घंटा तो घर में आया तो टीवी स्टार्ट, उसमें भी अभी कमी हो गई तो वीडियो कैसेट लेके आओ, वो लगाओ. रात को 12 बजे तक भी नींद नहीं है, 12-1 बजे तक भी समय नहीं है. आत्मा के लिए समय नहीं है, बाकी सबके लिए समय है. खाने का समय मिलता है, पीने का मिलता है. नींद लेने के लिए कितने घंटे हैं? मिनिमम 6 घंटे तो है ही है उसके पास. और आत्मा के लिए कितनी सेकंड देते हो? मिनट घंटे की बात नहीं करता हूँ, सिर्फ सेकंड की बात करता हूँ. 1 सेकंड भी नहीं है आत्मा के लिए देखने के लिए दिन भर में. बस ये अधोगति के लक्षण है पूरे. अब क्या एक ऐसी पोजीशन में हम खड़े हैं, कम से कम उसका दुख तो लगे. क्या रे मेरा क्या होगा, मेरी जिंदगी ऐसे ही चले जाती है, कम से कम इसका दुख लगना चाहिए. मुमुक्षु माने क्या कि इसका दुख लगे. आत्मा के दर्शन होवे वो तो ज्ञानी हो गया. फिर तो आत्मा के दर्शन हो तो ज्ञानी हो गया. मुमुक्षु का मतलब क्या, ये बात कहते हैं कि मुमुक्षु किसको कहें कि जिसकी वर्तमान जो हालत है, जो पोजीशन चल रही है अपनी वर्तमान आत्मा की जो दशा है, बहुत खतरनाक है. भव समुद्र में डूबा हुआ है. अनंत काल से डूबता बहुत बचने का प्रयत्न करा, फिर भी अभी तक बाहर नहीं निकला है. अब तक बाहर नहीं निकला है. और अभी ये अवसर आया है जहां सच्चे देवगुरु शास्त्र का संगात मिला है, एक नाव मिली है जिसमें बैठ जाएंगे तो गुरु सुखानी तो अच्छे मिले हैं गुरुदेव. आ काल में शुद्धात्म ज्ञानी सुखानी बहु मुझे पुण्य राशि फड़ो हो गुरु कान तू अविक मड़ो. इस काल में मिल नहीं सकती ऐसी बात, लेकिन फिर भी महाभाग्य से हमको मिली. अब हमको तो एक ही काम करना है, वो भी नहीं मारना है, क्योंकि वो तो सुखा नहीं करेगा ना. हमको क्या करने का है, क्या ऐसा भी नहीं करना है. हमको तो उसकी नाव में बैठ जाने का है. आप जैसा बोले वैसा चलो. सब मेहनत गुरु करे, अपने को कुछ नहीं करना है, अपने को सिर्फ बैठ जाने का. मुफ्त में हलवा खाने का है क्या. चौहान जी ऐसा ही कहते हैं कि हमको शास्त्र में से इतना निकालना नहीं आता है. दिमाग खराब हो जाए, फिर जाए घड़ी में एक नए से बात करे, घड़ी में दूसरे नए से बात, निश्चय ने व्यवहार ने भूत नहीं गमने भावी. हमारा तो दिमाग खराब हो जाए कि ये क्या निकाले इसके अंदर से. हमारी चाँच भी नहीं डूबती है. ये तो हम तो गुरुदेव ने पिरसा है पका पकाया हलवा, चबाना भी नहीं पड़े, सीधा ही गट 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 गट. और ताकत कितनी मिले है, बादाम का हलवा हो, चबाना नहीं पड़े और ताकत कितनी मिले. इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सब सीधा माल दे दिया है. बेंसी भी वही कहते हैं, पेंथीए जेम तेल देड़े एक एक शब्दों नो गुरुदेव अर्थ कर्यो छे. मोटा मोटा पंडितो गोथा खाई जाए, नहीं तो हमारी आ समय सामाથી अर्थ निकाळવાની हमारी ચાંચે ડૂબે નહીં એની અંદર. માતાજી જેવા જ્ઞાની કે
બધો ગુરુદેવનો ઉપકાર છે. જ્યારે આવી પોઝિશનમાં આપણે આવા સુવર્ણ કાળમાં આપણે આવ્યા છીએ, ચાન્સ ઝડપી લેવું કે ન ઝડપી લેવું. તક ગુમાવે કોણ? મૂર્ખ કહેવાય. તક ગુમાવે છે. એક તો માંડ તો ડચકા ખાતો હોય, એમાં ક્યાંક ચાન્સ મળી જાય, પૈસા અમે રોકશું, બધું અમે ખાલી 20% ને બાકી 80% તમારા લ્યો ને. આ દુકાને બેસી જાઓ, તમારે ખાલી બીજું કઈ નહીં, તમે ખાલી હિસાબ કિતાબ સંભાળજો, કે અમને હિસાબ કિતાબ નથી આવડતા. ખાલી તમે ઘરે ધડા પર બેસીને તમને કેટલા જોઈએ છે વાત કરો ને. લક્ષ્મી ચાંદલો કરવા આવે કે ના, જરા મારું મોઢું ઠાપ કરીને આવું પછી વાત. બેઠો રે ભાઈ, તારો ચાન્સ ગયો વધવા. આવો सुवर्ण काल से। ऐसे सुवर्ण काल में अगर हमको आत्मा की चिंता न लगे तो मुमुक्षु भी नहीं है। सारा दिन उसमें ऐसा अनंत काल बहुत दुकान चलाई, बहुत मजदूरी तो बहुत की है, अनंत काल में क्या कम की है क्या? और बाहर के संयोग तो अनंत बार मिले और अनंत बार बिछड़े भी। कभी भिखारी ऐसा बना कि 100 बार मांगने जावे न तो एक बार भी बटका नहीं मिले खाने का। 10-10 दिन 15-15 दिन तक भूखा रहना पड़ा है, सूखा रोटला भी मिला नहीं। ऐसे दिन भी इस जीव ने निकाले हैं भूतकाल के अंदर। और इतना चक्रवर्ती जैसा राजा बना है, बड़ा राजा बनता है तो हाथ के नीचे खंडीय राजा होते हैं ना, छोटे छोटे, ऐसा राजा भी कई बार बना है। स्वर्ग का देव भी अनंत बार बना है। कई बार के संयोग तो कई बार मिले और कई बार बिछड़े। एक अंदर में चैतन्य आत्मा नहीं मिला है कभी, आज तक नहीं मिला है। दर्शन भी नहीं किया है, कौन है वो नहीं मालूम, कैसा है नहीं मालूम। जिसके दर्शन मात्र से एक समय दर्शन कर लेवे ना तो जन्म मरण का बीज खत्म हो जाए। विश्व में सबसे अद्भुत में अद्भुत, आश्चर्यकारी में आश्चर्यकारी, इसके जितना सुंदर कोई नहीं दुनिया के अंदर। ऐसी सुंदर वस्तु भगवान आत्मा है, जिसके गुण गाते गाते गुरुदेव थकते नहीं है। एक एक प्रवचन में आत्मा, भगवान आत्मा का नाम कितनी बार आता है, अब टैप सुन के देखना, आप गिन के थक जाओगे। आत्मा आत्मा बोलते इतनी बार बोलते हैं, 100-150 बार तो मिनिमम एक एक टैप प्रवचन के अंदर। प्रभु प्रभु करके बुलाते हैं, लेकिन इस प्रभु को शर्म नहीं है। इस प्रभु को इतनी तारीफ, अनंत गुणों नो गोदाम, शक्तियों नो संग्रहालय, कुछ तारीफ करने में बाकी नहीं रखे। लेकिन हमको ये सुनकर के, ऐसी वाणी सुनकर के कभी ऐसा भी विचार नहीं आया, चलो ना आज देख ले अपने स्वरूप को, कैसा स्वरूप है। इतनी महिमा करते हैं तो कुछ तो होगा कि नहीं होगा। खाली महिमा करते हैं कि फुसलाते हैं लोगों को, क्या मिलेगा उनको। तो कुछ एक दफे देख तो लेवे, ऐसी जिज्ञासा सच्ची भी नहीं हुई है। ओबेन श्री कहते हैं कि अरे इस जीव ने अपने आत्मा को देखने का सच्चा कुतूहल भी नहीं किया है, कैसा होगा मेरा आत्मा। जिसके महिमा गाते हैं ज्ञानी पुरुष, गीत गाते गाते थकते नहीं है। जो हमारे सिद्ध भगवान जैसा हमको बनना है, वो सारी दुनिया को नहीं देखते हैं, दिख जाए तो भी नहीं देखते हैं, अपने आत्मा में ही डूबे रहते हैं। ऐसी क्या शक्ति होगी आत्मा के अंदर, ऐसा क्या सुख मिलता होगा। सही में मैं ऐसा हूं, ऐसा कभी कुतूहल भी जीव ने नहीं किया है। और ये सबसे बड़ा दोष कृपादेव कहते हैं यहाँ पर। तो कम से कम अपनी जो वर्तमान जो स्थिति है उसका दुख लगे हमारे को कि अरे रे मैं आत्मा का दर्शन नहीं कर पाया अभी तक, और ये टाइम तो चले जा रहा है हाथों से, और ये आंख बंद होगी तो मेरा क्या हाल हो जाएगा। आराधना तो नहीं होती है, उल्टी विराधना होती है, त्रास होता है। आप ज्ञानी की इच्छा अनुसार चलने का प्रयत्न कीजिए, क्योंकि आप मुमुक्षु अवस्था में अगर हो, आपको शुद्ध नहीं है, आपको कैसे चलना है, कैसे बर्ताव करना है, कैसे रहना है, आपको पता नहीं है। छोटे बच्चों को कुछ पता लगता है, 1 दिन 2 दिन का हो, क्या पता चलता है। अगर आपको सच में आत्मा की दया आती है तो आप एक एक काम पूछ पूछ के करो। आप ऐसा समझो कि हम 1 दिन के बच्चे हैं। अगर आपको सच में आत्मा की दया आई है और चिंता लगी है, भाव भ्रमण से छूटना है, तो आप ये समझना कि मैं 1 दिन का बच्चा हूं। मैं अपने आप तो पानी भी नहीं पी सकता हूँ, वो भी कोई माँ पिलावे तो हमारे लिए तो ज्ञानी भी माँ बाप है, जो भी ऐसे वही है हमारे लिए, तो वो है। ऐसा समझ कर करके अगर आप कोई भी व्यवहार करोगे तो बच जाओगे, नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी। आराधना करने जाओगे और विराधना हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, मामला उल्टा हो जाएगा। आप समझते हो कि
हम कोई अच्छा कर रहे हैं लेकिन अच्छा नहीं होता है, बुरा होता है। आप डिसीजन नहीं ले सकते। मुमुक्षु अवस्था में तो पागल ऐसा होता है जीव, उसकी मति खराब हो गई है। उसको कृपाउंडे की बात देखो, मुमुक्षु अवस्था में क्या हुआ है। 161 देखो क्या हुआ है, अनुभव के 3 दिन पहले की बात। क्या हाल होता है मुमुक्षु का। तो એ સહજાત્મા સ્વરૂપી તમે ક્યાં ક્યાં ને કેવી કેવી રીતે મૂંઝાયા છો તે કહો। આવી વિભ્રમ અને દિગ્મુખ દશાસી હું શું કહું, તમને શું ઉત્તર આપું। મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે ને ગતિ ચાલતી ખેદ ખેદ અને કષ્ટ કષ્ટ આત્મામાં થઈ રહેલ છે। આ મુમુક્ષ દશા છે, આ ટોપ લેવલના મુમુક્ષો। અને આપણે 3 મુમુક્ષના પ્રકાર કીધા ને, એક ટોપ લેવલની, એક મીડિયમ અને એક નીચેનું। 1 2 3 ऐसा। 3rd क्लास, 2nd क्लास ने फर्स्ट क्लास। आ फर्स्ट क्लास ની વાત કરીએ, હવે 2nd ક્લાસ ની વાત કરીએ। 133 નંબર, એ પણ ફર્સ્ટ ક્લાસ જેવી જ છે દશા। આપણે 2nd ક્લાસ કેવા જ નહીં, અમને તો ફર્સ્ટ ક્લાસ જ છે। કૃપાવડેનું બધું ફર્સ્ટ ક્લાસ છે। 2nd ક્લાસ કરીએ તો તકલીફ થાય, અમને તકલીફ થઈ જાય એવું છે। અન્ય ક્લાસ જ નથી કોઈ વસ્તુમાં, છતાં આપણે તો દશા થાય છે। ફર્સ્ટ નંબર લઈએ ને પછી 2nd નંબર 3rd નંબર લઈને આવીએ। એટલે મુમુક્ષુ શબ્દનો અર્થ સમજાય કે મુમુક્ષુ વોટ ઇઝ મુમુક્ષુ। ખ્યાલ આવે કે આપણે મુમુક્ષુ છીએ કે કેમ, શરમ આવે આપણને। હવે મુમુક્ષુ આવા હોય તો પછી આપણે ક્યાં। મુમુક્ષુ જો આવા હોય, જે જ્ઞાની બનવાના છે એ આવા હોય તો હું ક્યાં। મારે તો પતો જ નહીં લાગે ક્યાંય કોઈ ઠેકાણે। ને આપણે કઈ કિંમત ગણતા હોય આપણી, કઈક આપણે વેલ્યુએબલ છીએ, કઈ આવડું મોટું મંદિર બનાવવા જઈએ છીએ, બહુ મોટું કામ ઉપાડ્યું છે આખો દિવસ, પણ નહીં। મુમુક્ષુના દાન દીદાર બીજા હોય છે બધા। જો આ 82 નંબર જુઓ આપણે, 82 નંબર। દુખિયા મનુષ્યોનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હોય 22 વર્ષ, જુવાન જોત અવસ્થા, વેપાર ધંધો, મોટી જાહેરાતનો વેપાર, હીરા મોતીનો વેપાર, અને બુદ્ધિ કેવી, આખા હિન્દુસ્તાન શું આખા વર્લ્ડમાં એનું નામ, વર્લ્ડ ફેમસ। क्या लिखते हैं, દુખ્યા મનુષ્યોનું પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હોય તો ખચિત એના શિરોભાગમાં હું આવી શકું। લ્યો, એ મુમુક્ષુ है। मुमुक्षु नंबर 1 और मुमुक्षु नंबर 2 133। देखो कैसी हालत। 128 तो भूल गया, 128 ले गए। 128 में क्या कहते हैं, વધારે શું કહેવું। એનું સ્મરણ થતા હવે કેમ જીવવું એ ચિંતા થઈ પડી છે। જો આ ચિંતા થઈ, મારા આત્માનું શું થશે, મારા આત્માનું શું થશે। આખો દિવસ પુણ્ય ને પાપ કરું છું, મારું શું થશે એમ એ થઈ આવે। ફરી ન જ જન્મવું અને ફરી એમ ન જ કરવું એવું દૃઢત્વ આત્મામાં પ્રકાશે છે। પણ કેટલીક નિરૂપાયતા છે, ત્યાં કેમ કરવું, શું કરવું, ક્યાં જાઉં, ક્યાં જઈને વસવું, કોનું શરણ લઉં, એવા ગુરુ ક્યાં છે, એવું સ્થાન ક્યાં છે કે જ્યાં જઈને એની છત્રછાયામાં રહીએ। આ બધા પ્રોબ્લેમ અહીંયા આવી ગયા છે। અને ઝંઝાટ તો બહારની, પૂર્વે કરેલા કર્મ કોઈને છોડતા, એ અજ્ઞાની ન છોડે, મુમુક્ષુ ન છોડે, ને જ્ઞાનીને પણ, તીર્થંકરના જીવને પણ ન છોડે। એ તો બાકી જ છે, એ જે છે એમાંથી જ આપણે તરવાનું છે। બધું છોડીને ભાગવાનું નથી કઈ। જેવી હાલત છે, જે પોઝિશન છે એમાંથી આપણે રસ્તો કાઢવાનો છે। બધું છોડીને કાયર થઈને નહીં, આ કાયરના કામ જ નથી। વિતરાગ ને વાણીમાં 5 હાલત વસનામૃત વિતરાગના પરમ શાંત રસ મૂળ ઔષધ જે ભવરોગના પણ કાયર ને પ્રતિક। એને તો મારા આત્માનું કરવું છે, પણ આજે આનું શું થયું, પછી આનું શું થશે। બેઠો જા ભાઈ, તું બાયલો છે સાવ, તારું કામે નથી। તું રણ મેદાનમાં ઉતરે છે ને ઘોડી રાખશે તો તલવાર રાખશે તો બેઠો જા, તું એમને એમ બેઠો રહેતો। મને ઘસર કોઈ ન પડવો જોઈએ તો રણ મેદાનમાં શાંત મજા છે। સંતોષ જાને અંદરમાં રૂમમાં બેડરૂમમાં જઈને સુઈ જાને, કામ નથી એવું। મારે મારા આત્માનું કરવું છે। જગતનું જેમ થવું એમ થાવ, ભલે મૃત્યુ આવે મંજૂર છે, પણ મારે મારા આત્માનું કરવું છે। આ સૂર્યના લખાણ છે, અને એવા સૂર્ય એ જ મુમુક્ષુ હોય, બીજાનું કામ નથી આની અંદર। એ કે છે અહીંયા આગળ નિરૂપાતા છે, શું કરવું। એમને પણ પ્રોબ્લેમ હતા, એના પણ લગ્ન થઈ ગયેલા,
ગ્રહવાસ હતો, પાર્ટનર હતો, બધી જવાબદારી બધી એમના ઉપર હતી. એ લોકો પૈસા નો કર્યા, બધી જવાબદારી તેમના ઉપર હતી. સમજ્યા? આટલું આટલું બોજો ઉપાડીને પણ એમને એમાંથી જ રસ્તો કાઢે ને. એમનું જીવન બતાવે છે આ પ્રકારનું. 128 તમે જુઓ એટલે એને ખ્યાલ આવે કે મારે આત્માનું કરવું છે, પણ શું કરવું? નિરૂપાય છે શું કરવું? કે જે દ્રઢતા છે તે જરૂર પૂર્ણ પડવી. પણ જે કઈ આડું આવે છે એને હટાવવું પડે છે, કોરે કરવું પડે છે, ખસેડવું પડે છે, અને એમાં કાળ જાય છે, જીવન ચાલુ જાય છે. એક સમય, એક દિવસ ગયો એમ નહીં, મારો જીવન ગયું એમ લાગે છે. એક સેકન્ડ ગઈ વેસ્ટમાં એમ નહીં. શું ગયો? મારું જીવન વયું ગયું, આખો ભાવ વયો જાય છે મારો. આવો સુંદર ભાવ મારો વયો જાય છે પાણીના ભાવમાં. આવ્યો તો કમાણી કરવા માટે ને થાય છે શું? કરજો. દેવું પતાવવા આવ્યા જગમાં, દેવું વધતું જાય, એવી હાલત થઈ જાય છે. જીવન ચાલુ જાય છે, ન જવા દેવું. જ્યાં સુધી પોતાનો વિજય ન થાય, આત્માના દર્શન ન થાય, ત્યાં સુધી એમ ન કરવું. એવું દડત્વ આત્મામાં પ્રકાશે છે. તો હવે શું કરવું? રસ્તો છૂટતો નથી. મુમુક્ષુ છે ને, મુમુક્ષુ રસ્તો ન સૂજે. રસ્તો કોને સૂજે? જ્ઞાનીને. અને અજ્ઞાની રસ્તો જોતો જ નથી. પહેલી વાત તો એને માર્ગ જ જોતો નથી. અજ્ઞાનીની વાત અલગ છે આખી. એને માર્ગ જોતો નથી. જ્ઞાનીને માર્ગ મળી ગયો છે, એને જોતવાની ગોતવાની જરૂર નથી. પ્રોબ્લેમ જે કઈ છે કોને છે? માર્ગે ચડવું છે ને માર્ગે ચડાતું નથી, રસ્તાની ખબર નથી કઈ. આ પોઝિશનમાં છે. એટલે કે છે અહીંયા આગળ કદાપી કોઈ રીતે એમાંનું કઈ કરીએ તો એવું સ્થાન ક્યાં છે કે જ્યાં જઈને રહીએ? કોના શરણમાં રહીએ? કોના ગાઈડન્સમાં રહીએ? અર્થાત એવા સંતો ક્યાં છે કે જ્યાં જઈને એ દશામાં બેસી એનું પોષણ પામીએ? ત્યારે હવે શું કરવું? આ મુમુક્ષુ. પછી 133 તો આપણે વાંચેલો છે કે રાત ને દિવસ એ પરમાત્મા વિશેનું મનન રહે છે, ચિંતન પણ એનું, ખાવું પણ એ, પીવું પણ એ, બધું એ જ. કઈ જોવું ગમતું નથી, ચાખવું ગમતું નથી, બોલવું ગમતું નથી, બેસવું ગમતું નથી, ઉઠવું ગમતું નથી, જાગવું ગમતું નથી. આ મુમુક્ષુની દશા. ને પેલી જે છેલ્લી હતી જે એ સહજાત્મ સ્વરૂપે તમે ક્યાં ક્યાં કેવી કેવી રીતે છો, આવી વિરમ દશા શું છે, આવી મૂંઝવણ શું છે, તમને શું જોઈએ છે, તમે શું જવાબ આપું? મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, ગતિ ચાલતી નથી, ને કષ્ટ કષ્ટ ને ખેદ ખેદ આત્મામાં થઈ રહ્યો છે. આ મુમુક્ષ નંબર ઉત્કૃષ્ટ મુમુક્ષ નંબર છે, ફાઇનલ મુમુક્ષ નંબર. આ એક જ પત્રમાં બધા મુમુક્ષોની વાતો આવશે ટોટલી, એક એક ખેડ સુધી પહોંચાડશે કૃપાડે. અગર આ પત્ર સમજી ગયા તો બધું પેડો પાર સમજી લેવાનું. આવો પત્ર છે જબરદસ્ત. मुमुक्षु कोने कहवाय? मुमुक्षु तो उसका नाम है। आत्मा के दर्शन नहीं होंगे जब तक शांति से नहीं बैठे, क्योंकि आत्मा का दर्शन नहीं होता। इसका कारण यह है कि इसका ज्ञान का उपयोग कहीं जा रहा है और जगह पे, कहीं और जगह लग रहा है। जो ज्ञान का उपयोग आत्मा को देखने में रुकना चाहिए था अंतर्मुख होकर के, वो उपयोग बाहर होकर के किसी पंचायत में पड़ा है, 500 की, और ऐसी पंचायत में पड़ा है कि जिससे उसका और नुकसान बढ़ते जा रहा है, बढ़ते चले जा रहे हैं, पाप बढ़ते जा रहा है, भाव भ्रमण बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा काम चल रहा है अभी इस वक्त। दिन भर वही काम हो रहा है, रात और दिन वही काम हो रहा है। किसी का भला करने में रुक गया तो भी उसने क्या किया? अपने आत्मा को तो नहीं देखा ना, नुकसान हो गया। भगवान की पूजा करने आया लेकिन अपने देव को भूल गया ना, वही देव को याद करने गया तो नुकसान हो गया। देखो, उपयोग अपने स्वरूप से बाहर निकले कि मरा समझ लो, जम का दूत आया समझो। ये ज्ञानियों का फरमान है, तीनों काल के तीर्थंकरों का ये हुक्म है। गुरुदेव की वाणी दृष्टना निदान में है बात। तीनों काल के तीर्थंकरों का ये हुक्म है कि तू तेरे आत्मा को ही देख और किसी को देखना मत, बंद हो जा। 100 वर्ष ने परती एक ज उपाय है, टूंको टच आटलू है। પણ એ જીવ આ નથી કરતો અને બીજું કઈ કરે છે। આ કરવા સિવાયનું બીજું જે કઈ પણ કરે છે જીવ, એ બધો મોહનો પ્રકાર છે। મોહનો પ્રકાર એટલે કરે એનો વાંધો નહીં, પણ એને બેકગ્રાઉન્ડમાં જે મોહ છે ને એ મારી નાખે છે। ખાવે એનો વાંધો નથી, ખાય પીએ એનો, ક્રિયા થાય એનો વાંધો નથી, પણ એના વગર ન ચાલે જે વાત મૂકી છે ને અહીંયા આગળ, ધેટ ઇઝ કોલ્ડ મોહ। દર્શન મોહ કોને કહેવાય, ચારિત્ર મોહ કોને કહેવાય?
एक बार पहले खुलासा आ गया था, दर्शन मोह किसको, चारित्र मोह किसको कहते, कि खाना खाने की क्रिया तो आत्मा कर ही नहीं सकता, वो तो किसकी क्रिया है, जड़ की क्रिया है। खाना खाने का जो भाव है वो चारित्र मोह में चले गए। आप भाव कर सकते हो, आप भाव अगर आता है तो आपको दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है कि टीवी देखने का भाव आया ही क्यों, खाना खाने का भाव आया ही क्यों, दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। आप जिस अवस्था में हो, शिव भगवान को भाव थोड़े आने वाले, आपको ही आने वाले ना, आप शिव भगवान थोड़े बन गए हो, तो वो ऐसे भाव तो आएंगे ही आएंगे। एक किस में चले गए, चारित्र मोह में चले गए, उसका दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये भाव मैंने किया और ये अच्छा नहीं किया और ये अच्छा किया, दर्शन मोह वाला मामला है। गलती कहाँ हो रही है असल, वो ढूंढना है हमारा। मेन बात तो वो है, जीवों को गलती कहाँ हो रही नहीं मालूम है, और फिर उल्टा जहाँ गलती नहीं है वहां गलती मानते हैं, फिर उसका ऑपरेशन करते हैं। ये आंख खराब हो गया तो इसका नहीं इसका कर देते हैं ऑपरेशन, तो पूरा अंधा हो जाता है। समझे? पहले गलती कहाँ हो रही है, किस पे वजन देना है, क्या तकलीफ क्या हो रही है, तो प्रॉब्लम मोह का है। तो विकारी भाव आते हैं, पुण्य पाप के भाव आते हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। लेकिन हमको ऐसे ऐसे जब भाव होते हैं तब तब हम बेहोश हो जाते हैं, हमको पता ही नहीं होता कि कितना नुकसान होता है आत्मा का, और चिंता नहीं होती है आत्म कल्याण करने की, शांति की। और फिर उस भाव जो आते हैं वो मैं करता हूँ, ये ठीक किया ये ठीक नहीं किया, ऐसे में जो फंस जाता है जीव, मोह का प्रकार है। मुमुक्षु जीव वो है कि जिसको ऐसा मोह नहीं चाहिए, मोह किसी हालत में नहीं चाहिए, एक सेकंड के लिए भी नहीं चाहिए। राग द्वेष के भाव होंगे तो निपट लेंगे हम, या असंयोग वियोग होंगे तो उसको भी निपट लेंगे बाद में, लेकिन ये मोह तो नहीं चाहिए मेरे को। इसका नाम है मुमुक्षु। बराबर ख्याल में आ गया कि गलती मेरी कहां हो रही है, ऐसे भाव आया क्यों आया क्यों आया क्यों, 6 महीने निकल गए, 12 महीने ऐसे रोते रोते ही। एक सेकंड में ज्ञानी बन सकता है जीव, लेकिन दर्शन मोह को समझ लेंगे तो, दर्शन मोह को समझना है, एक सेकंड में हो जाए ज्ञानी। बोलो अभी का अभी गलती कहां हो रही है वो देख के उसको वहां ऑपरेशन करो, अभी का अभी साफ हो जाए मामला। कितनी देर लगेगी? कांटा इस पैर में चुभा है और तुम उस पैर में से निकालते हो, ढूंढते हो किधर चुभा है किधर, कहां से मिलेगा? लेकिन उल्टा और खड़ा करेगा तो और वहां पर पीड़ा पड़े हो जाएगी बेकार की। ऑपरेशन कहां करना है, किधर करना है, गलती कहां हो रही है? मुमुक्षुता वो है कि जो सर्व प्रकार की मोह आसक्ति से मुंझा कर, आसक्ति भाव विभाव भाव आते हैं, वो दुश्मन नहीं है। इसके बैकग्राउंड में ये अच्छा है ये बुरा, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए, ये जो चला है ना, जो ये मोह है, उससे जीव घबरा गया है मोह से। क्रोध को तो शांत कर सकेंगे, लो ना क्रोध करना ही नहीं, आंख बंद कर दो ना, गाली कान में घुंघरा डाल दो, गाली सुनना ही नहीं दे तो क्रोध कहां से करोगे? उसको तो आसान है क्रोध नहीं करना है तो। आंख को पट्टी लगा दो, दुश्मन दिखेगा नहीं। कान बंद कर दो तो गाली सुनाई देगी नहीं, तो क्रोध क्या करोगे? खाक करोगे। लेकिन मोह को कैसे खत्म करोगे? करना नहीं करने की बात को कहां से निकालोगे? तो बात तो प्रॉब्लम वो है ना, मुमुक्षु का प्रॉब्लम वो है कि मेरे को ये करना ये नहीं करना, इसमें चले जाता है जिंदगी पूरी। वो तो वहां हो गया है हमारा, उससे घबराता है जो कि इससे कैसे छूटे, वो रास्ता मेरे को नहीं मालूम है। क्रोध को नहीं करना वो रास्ता मालूम है क्या? उपवास करना मालूम है खाने का राग निकालने के लिए। अच्छा गाना नहीं सुनना है तो कान पे पट्टी बांधना वो मेरे को मालूम है, लेकिन ये करना नहीं करने में से हटना और जाता भाव में रहना वो मुझे नहीं मालूम है। प्रॉब्लम इस बात का है। और जब तक वो अपने आत्मा को नहीं देखेगा तब तक जाता भाव में आ ही नहीं सकेगा। अब क्या करोगे वो मेरे को नहीं मालूम है। ये अवलोकन जो है ना, ये भी सीढ़ी है, क ग ग जाता भाव में रहने का अभ्यास जो आगे होने वाला है, उसकी ये भी सीढ़ी यहाँ से अवलोकन है। वो अभी कहेंगे आगे, अभी तो अपनी मुमुक्षु की बात चल रही है ना अभी तो मुमुक्षुता यह है कि सर्व प्रकार की मोहाशक्ति से मुंझा करके, तो हिम्मत नहीं हारना। हिम्मत आ जाए तो कायर, यहाँ से भाग जाए तो नहीं मालूम पड़ता है तो और भी कोशिश करेंगे, लेकिन करके दिखाएंगे, करके दिखाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस पार निकल के बताएंगे। ऐसा जो अगर वो हो गए ना शूरवीरता तो ठीक है। तो ये मुमुक्षु का लक्षण है, सर्व प्रकार की मोहाशक्ति से मुंझा करके एक मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करना
उसका नाम है मुमुक्षुता। हिम्मत हार के जब रास्ता नहीं सुध रहा है, अभी आत्मा नहीं दिखता है, इतना साल शास्त्र पढ़ा हूँ, हमेशा रोज सुनता हूँ, गुरुदेव की टेप रोज सुनता हूँ, इतनी भक्ति करता हूँ, इतनी पूजा करता हूँ, लेकिन अभी तक तो मिला नहीं है, जान दो, छोड़ दो, अब मुमुक्षु नहीं है। कुछ भी हुआ हो, 20 साल क्या, अनंत काल घुमाने को तैयार हूँ, अगर मेरे को आत्मा मिलता है तो चाहे जितनी मेहनत करने को तैयार हूँ, मेरे को चाहिए चाहिए चाहिए, और मैं कोशिश करके रहूंगा, वो मुमुक्षु है। लेकिन क्या है कि हमने दूसरा क्या साथ में ये भावना नहीं भाई है, करके दिखाऊंगा, ये भावना नहीं भाई है, करना ही ऐसी भावना नहीं भाई है। प्रॉब्लम वहां हो गया, भावना की खोट हो गई वहां पर। बाहर की सब ठीक ठाक व्यवस्था बैठ गई पुण्य के प्रताप से, लेकिन अंदर की व्यवस्था नहीं जमी अभी तक, ये प्रॉब्लम हुआ है यहाँ पर। तो सर्व प्रकार की मोहाशक्ति से मुंजा करके एक मोक्ष के लिए ही प्रयत्न करना, उसका नाम है मुमुक्षुता। बस यहाँ तक ही रखेंगे, फिर कल और ले जाएंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे,